Just as the huge ship rescues the people who are sinking in the ocean, similarly, we are sinking in this oceanic world, and Param Gurudev, with his tireless efforts, is trying to rescue us from this oceanic world. By preaching every day with a different wisdom to attain self-realization. In yesterday's preaching, Param Gurudev stated that the true knowledge is the one which gives us the truth of every situation, which makes us understand the truth of every situation and keep us gratified. Because when we understand the truth of every situation, the truth of every state, the aversion and the attachment towards the situation or towards the material increases or decreases. It decreases. But the one who is not able to understand the true nature, but the one who is not able to understand the truth of the situation, the knowledge which is in the form of ignorance, keep on disturbing them. Later on, Param Gurudev, giving us the reality of this world, said that everything which we see around us is not a whole entity. Everything which we see around us is not a whole entity, but it's in the form of a combination of small particles. When these small particles comes together, we are able to see anything around us. And these small particles are called as Parmanu. What are they called as? Parmanu. Can anyone explain me what is Parmanu? How do you define Parmanu? They are small particles, yes. They come together. Okay. But how will you define Parmanu? Yes. Parmanu is the smallest part of the matter which cannot be divided further. It is the indivisible part of the matter. Even the beautiful body which we see is also made up of these small particles or Parmanu. Just as the droplets come together, just as the small droplets come together and form a big ocean, or just as the small bundis come together, they combine together and form a big bundi laddu. Similarly, anything which we see around us, it's the combination of these small particles. And the combination of these small particles is called as? No. Gurudev had explained us one more word. It is Pudgal. But yes, it is called as Skand. What is it called? Skand. Combination of these small particles is called as Skand. And the combination of the Skand forms Pudgal. So, whatever we see around us, the whole entity or particles, whatever we see around us is the combination of small particles. And when these Parmanu disperses from the matter, when these Parmanus disperse from the matter, the object or the matter wones out. Later on, Param Gurudev explained us about the motion of the matter. Does the matter have motion? Can matter move by its own? No? Then? When the matter or the Pudgal gets connected with the soul, it can manifest in a tangible form or it can have a physical movement. And
when these matter are heated, or when the temperature of the matter increases, it can move by its own also. So, in this present time, many doctors suggest drinking warm water. Why? Why? Because by drinking warm water, the particles inside our body, they start moving very fast, and the circulation of the blood in our body also increases. So by drinking warm water, we are able to eliminate the toxins which has got accumulated in our body. So by drinking warm water, we can improve our health and keep the body in an optimal state. But what is the need to take care of this body? Why should we take care of this body? Why should we take care of this body? Why? Sorry, what? Again, the body is state or an existence. The body is a state or an existence. Is it state or an existence? It is a state. Then why should we take care of the state? Then what is the need to take care of the state? Because ultimately this body, yes, because this body is connected with the soul, ultimately, if this body is healthy, it will take us to the path of liberation. But the person who transcends the realm of matter and particles, transcends the realms of this particle and matter, can become supreme one day. So, it is necessary to take care of this body, but it is not necessary to get attached with the body. Later on, Param Gurudev said that why it is necessary to know the nature of the material. Why? Because if we don't understand the nature of the material, we get attached to the material. We try to understand, we need to understand the nature of the material, because if we don't understand the nature of the material, we start considering the nature as our own. We get connected to the nature of the material, and we keep understanding that these material is our own nature. So it is necessary to understand the nature of the material. Later on, Param Gurudev stated that we are very lucky that out of infinite soul, only one soul is able to understand the self-realization. Only one soul out of infinite soul is able to attain self-realization. And we are the luckiest one. And we are the luckiest one to understand this self-realization from Param Gurudev. Now, we'll try to understand these wisdom in Hindi. परम गुरुदेव, जो हम पर अनंत करुणा करके जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो और एक बड़ी सी जहाज आकर उसे बचा ले, वैसे ही परम गुरुदेव हमें भी इस समुद्र रूपी संसार से सम्यक्त्व का ज्ञान देकर हमें बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे सत्य हमें हर सिचुएशन में, जैसे सत्य ज्ञान हमें हर सिचुएशन में समाधि प्रदान करता है, हमें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता है, और अगर यदि हम वह सिचुएशन के सत्य तक नहीं पहुंच पाते, यदि हम में वह ज्ञान नहीं है और हम सिचुएशन के सत्य तक नहीं पहुंच पाते, तो हमारे अंदर के अवगुण, हमारे अंदर के राग और द्वेष बढ़ जाते हैं। अज्ञान रूपी ज्ञान
अज्ञान रूपी ज्ञान, जो ज्ञान हम में है वह अज्ञान है, और वह अज्ञान रूपी ज्ञान हमें बार बार डिस्टर्ब करते रहता है। परम गुरुदेव ने हमें समझाया, इस जगत के सत्य को समझाते हुए परम गुरुदेव ने हमें समझाया कि इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, इस जगत में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह अखंड नहीं है। क्या है? वह अखंड नहीं है, पर वह किस फॉर्म में है? वह अंश अंश का समूह है, जिसे परमाणु कहा जाता है। परमाणु यानी जो फर्दर, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो आगे जाकर कोई और भाग में डिवाइड नहीं हो सकते, उसे परमाणु कहा जाता है। जो शरीर हमें बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है, वह भी अंश से बना हुआ है, वह भी परमाणुओं से बना हुआ है। जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ा सा समुद्र बन जाती है, जैसे छोटी छोटी बूंदियां मिलकर एक बड़ा सा बूंदी का लड्डू बन जाता है, वैसे ही इस जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब छोटी छोटी क्या है? छोटे छोटे परमाणु है, और उन परमाणुओं का समूह है। और जब यह परमाणु कोई पुद्गल से अलग हो जाता है, तब वह पुद्गल जीर्ण शीर्ण होने लगता है, जीर्ण शीर्ण होने लगता है। पर हमें इस पुद्गल के बारे में क्यों जानना चाहिए? हमें इस पुद्गल के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्यों जानना चाहिए हमें इस पुद्गल के बारे में? यस, हमारे आसपास में जो कुछ भी है वह सब पुद्गल ही है। यदि हम पुद्गल के बारे में नहीं जानते हैं तो हम पुद्गल को ही अपना स्वभाव मानने लगते हैं, हम पुद्गल को ही अपना मानने लगते हैं, और हम पुद्गल से इतना अटैच हो जाते हैं, हम पुद्गल से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि यह पुद्गल ही मैं हूँ और मैं ही पुद्गल हूँ, पुद्गल ही मैं हूँ और मैं ही पुद्गल हूँ। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें पुद्गल के बारे में जानना चाहिए। जितना हम आत्मा के बारे में जानते हैं, जितना हम अपने स्वयं के सोल के बारे में, अपने आत्मा के बारे में जानते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने आसपास में जितने भी पुद्गल हैं उनके बारे में भी हम जान लें। यदि हम उनके बारे में नहीं जानते तो जो हम नहीं हैं उसे हम अपना मानने लगते हैं, और जो हम हैं उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमें बार बार चिंतन करते रहना है कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप पुद्गल है या फिर मेरा स्वरूप आत्मा है। मैं इस पुद्गल से अलग हूँ या मैं पुद्गल से जुड़ा हुआ आत्मा हूँ, या मेरा अस्तित्व सिर्फ आत्मा का है। इस बारे में हमें बार चिंतन करते रहना है। परम गुरुदेव ने हमें समझाया कि जो भी पुद्गल हमारे आसपास होते हैं वह पुद्गल अपने आप भी गति कर सकते हैं, वह पुद्गल अपने आप भी गति कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही यह पुद्गल आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ये पुद्गल आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस कनेक्शन के वजह से वह प्रत्यक्ष गति कर पाते हैं। और जब इस पुद्गल के अंदर, इस पुद्गल की जो एनर्जी रहती है, उस पुद्गल के अंदर में जो हीट एनर्जी रहती है, जब वह हीट एनर्जी पुद्गल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब वह पुद्गल अपने आप भी, तब वह परमाणु अपने आप भी गति कर सकते हैं। इसलिए इस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए। क्यों? हमें गर्म पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर
हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वह बाहर निकल जाते हैं और हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होने लगता है। इसलिए हमें गर्म पानी पीना चाहिए और गर्म पानी पीने से हमारे शरीर की अवस्था भी स्वस्थ रह सकती है। पर हमें इस शरीर की क्यों केयर करनी चाहिए? इस शरीर की केयर हमें क्यों करनी चाहिए? परम गुरुदेव ने फरमाया कि जो परमाणु है वह परमाणु को हमें उस प्रकार के बनाने हैं, वह परमाणु को हमें उस प्रकार के सहाय रूप में बनाने हैं कि वह हमें परमात्मा बना दे, वह हमें परमात्मा बना दे। और जो परमाणु से पर हो जाते हैं और जो यह परमाणु से पर हो जाते हैं वह व्यक्ति ही परमाणु से पर होने के बाद परमात्मा बन पाते हैं। और हमारा सद्भाग्य है कि जो अनंत को नहीं मिला, इस अनंत की यात्रा में, इस अंधकार भरे हुए अनंत की यात्रा में जो अनंत आत्माओं को नहीं मिला वह हमें परम गुरुदेव से प्राप्त हो रहा है।